Okay. Yesterday, last class, what we did? Domain. Now we'll move on to range. Range of the function. Range. Range of a function. How to find the range of the given function? Say domain is nothing but input value. Range is nothing but output. For example, see, I have a function f of x is equal to x square plus 1. Okay. What is the range of this function? If I substitute the value of x as x belongs to R, what is the range is going to come? So we have a types of problem. So we'll take type 1, type 2, type 3 and type 4. Okay. So type 1, first type, methods of finding range. First problem, y is equal to x minus 1 divided by x plus 1. Y is equal to x minus 1 divided by x plus 1. Type 1. So first we'll take f of x. In the place of f of x we'll take y. Y is equal to a function. Then we will convert in terms of function should be in terms of x. Cross multiply y into x plus 1 is equal to x minus 1. Now open the bracket, y into x plus y is equal to x minus 1. Now separate x. Find the value of x. So to find that, what I will do, I will shift this x to this side. So what we will get? Minus 1 minus y. So take x common, y minus 1 is equal to minus 1 minus y.
x is equal to minus 1 minus y divided by y minus 1. When is x is defined? X should be defined. X should be defined. X की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आना है. In terms if I say you अनडिफाइंड कब होता है? जैसे डोमेन में था ना, y should not be equal to y minus 1 should not be equal to 0, y should not be equal to 1. Correct? Like how we used to find out the domain. Similar way you can find out the domain of this. So what is the domain of this? R. This is your range. Are you getting? In previous class, first what we'll do, we'll put y is equal to f of x. Then we'll find out the value of x is equal to. Now we should remove that point where x is going to be undefined. We should remove that value where x is going to be undefined. At 1 this is going to be undefined. Correct? So range is nothing but what is the range? Real numbers except 1. Understood? समझ में आ रहा? क्या करना है? फर्स्ट है y इज इक्वल टू, वी शुड टेक द वैल्यू, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, separate x, then you find out the value, remove that value where x is going to be undefined. X is going to be undefined. So what is the range? Real numbers except 1. Take down this first problem. This is the method of finding range. Step 1, this one, cross multiply. Open the bracket, y into x, y into 1. Then shift this x to this side, y to that side. Then take x common. Done? Then find out x is equal to. Separate x. We'll move on to next. Over. We'll take one more. Next. Still they are writing. I'll repeat one more time this problem. See, if you have a function f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1. So first step you should take y is equal to x minus 1 divided by x plus 1. Then cross multiply. Y into x plus 1 is equal to x minus 1. Open the bracket. Make terms of x to one side and y terms to one side. Now take x common. Now x is equal to what? Is this okay? X को separate करने के बाद क्या करना? Remove that point from the range where x is going to be undefined. If I take the value of y as 1, so our x will become undefined, correct? So what I will do, all real numbers except 1. All real numbers except 1. Is this okay? Any doubt? Okay, we'll move on to next. Over boys. Done. Next problem. F of x is equal to 1 divided by x minus 1. Will you try this? Tell me the answer. Solve and tell.
What is the range of this function? What is the range of f of x is equal to 1 divided by x minus 1? First step, what to do? Y is equal to 1 divided by, then next step, cross multiply. Y into x minus y equal to 1, correct? So y of x is equal to 1 plus y. So x is equal to what? 1 plus y divided by y. When x is going to be undefined, domain y should not be equal to 0, correct? लास्ट क्लास प्रेजेंट थे डोमेन और रेंज, और डोमेन की सम्स कराए ना टेम्पो नहीं थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता ना. So answer is range. What is the range now? R. Good, very good. Except 0. Correct. Over. Next problem. Problem number third. F of x is equal to x square minus 1 divided by x square plus 1. F of x is equal to x square minus 1 divided by x square plus 1. Find the range. So first what we have to take? Tell me the method. Y equal to x square minus 1 divided by square plus 1. Next what to do? Next step, cross multiply. Y into x square plus 1 is equal to x square minus 1. Open the bracket. Make the terms of x square to one side. Minus x square plus y equal to minus 1. Take x square common. Shift this to that side. So what is x square? Minus 1 minus y divided by y minus 1. Is this okay? Any doubt? Till here anybody have doubt? Now see, we know that range of x square is what? You have x square. इसमें तुम्हें कौन सा वैल्यूज डाल सकती, कुछ भी डालो तुम, आंसर क्या मिलता? If I take x as 0, you are getting 0. When I take x as minus 1, if I take x square as 1, if I take minus 2, so what values I'm getting? All. That means x square range is always greater than or equal to 0. Range is always 0 to infinity. Am I right? Now here x square is greater than or equal to, that means this function is also same, no? Minus 1 minus y divided by y minus 1 is greater than or equal to 0. Is this okay? Understood? Any doubt? Now multiply minus sign or else take minus sign common. This will become y minus 1, correct? Plus 1 divided by y minus 1. Any doubt? Now multiply minus sign, what will happen? Y plus 1 divided by y minus 1 less than or equal to 0. Now you know how to solve this inequality. By using what method? Wavy curve method. No. Last class we did.
If you have plus, take minus 2 plus. If I put 2, what answer I will get? Plus, no? Plus, minus, plus. So it is less than. So negative value we should take. They are telling it is less than. So what is our range? Minus 1 to 1. Range is minus 1 to 1. Any doubt? You should know wavy curve method. For the domain, we did so many problems. No, 30 problems, 40 problems we completed by using wavy curve method. Is this okay? Any doubt? Take down this. मिला आंसर तुम ना I have done some mistake there. मैं क्या तो एक मिस्टेक कर कहूँगा. Answer I have written minus 1 to 1. हाँ, correct. Here we should see this. Y minus 1 should not be, y minus 1 not be equal to 0. That means this should be open bracket. Where? हाँ, plus 1 की जगह क्या ना? Open bracket. Understood? मालूम हुआ? नहीं. ह्या वंदल वेवी कर्व मेथड में हम पूरा सॉल्व करे बट डिनोमिनेटर को देखती ना. अब मैं यहाँ 1 लिया तो 0 हो जाता. तो 1 को ओपन ब्रैकेट. 1 should be open bracket. तुम्हें क्लासेस पूरे प्रेजेंट रखो. जो पढ़ा रही हूँ वो घर को जाकर रिवाइज करको. नेक्स्ट क्लास को है तो समझ में आता. तुम्हें ब्लाइंडली आको बैठे तो क्या समझ में नहीं आता. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आज जो कराती हूँ वो घर को जाकर प्रैक्टिस करना तुम्हें. अब जो लास्ट क्लास वेवी कर्व मेथड के सम समय कर को ही अब मैं वेवी कर्व मेथड करा रहा हूँ. ये तुम्हें क्या अभी समझ में नहीं आता है. क्या वो कर को अब फिर वो क्लास कराना नहीं होता. नहीं वैसा अगर पोर्शन नहीं जाता सामने. We'll move on to next sum. Okay. Now second type. Y is equal to 2 sin x plus 1. Find the range. Y is equal to 2 sin x plus 1. If you are getting problems like sin x plus 2, 3 like this, or 3 sin x plus 4, anything like this. So very simple. First find out what is the range of sin x. What is the range of sin x? Minus 1 to minus 1 to 1. Correct? Sin x range is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. So I'll write down here. Sin x is less than or equal to 1, greater than or equal to minus 1. Any doubt? Now, what I am doing here, what we have here, or multiply 2. I want 2 sin x. No. So can I multiply 2 on both the side? So this will become what? Is this okay? Any doubt? Now what I left? I want 1 plus 1. So can I add plus 1 to right side? Minus 2 plus 1 less than or equal to 2 sin x plus 1 less than or equal to 2 plus 1. So this will become what? Minus 1 greater than or equal to 2 sin x plus 1 less than or equal to 3. So you are getting the range. Range means what? Minimum and maximum value. Correct? Output. So what is the answer? Minus 1 to. Is this okay? Take down.
Over. Done. Okay. Next sum. Will you try? 2 divided by 3 minus 2 sin x. Do it. Okay, see here. What is the range of sin x? 1 to minus 1. Just Abhish Naik problem solve for us. Just now we did. Correct? Now I want 2 there. So what I will do? Multiply 2. No, first multiply 2. This will become minus 2 sin x less than or equal to 2. 2 sin x है. अब है क्या है? So what I will do? Multiply by minus sign. If you multiply minus sign, inequality will become reverse. So this will become plus 2 greater than or equal to minus 2 sin x greater than or equal to minus 2. Understood? ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा. ये स्टेप समझ में आया? Now what I want? It is plus 3 or minus 3 here. So add plus 3 there. So 3 plus 2. Is this okay? Now it is in reciprocal. Correct? Whenever अगर से x की inequality है greater than or equal to 1, if you take reciprocal, it will change to less than. Example, 5 is greater than or equal 5 is greater than 2. Correct? Correct? If we take reciprocals, जब भी रेसिप्रोकल्स में लेती है इनइक्वालिटी क्या होती है? दो जगह चेंज होती है. एक को माइनस साइन मल्टीप्लाई करे तो दूसरा को रेसिप्रोकल्स लिए तो. सो दिस विल बिकम 1 by 5 1 by 1 is 1. Is this okay? Now what is left? जल्दी बोलो. So multiply 2. Multiply 2. You got the answer? So what is the range? Range is equal to 2 by 5 to 2. 2 by 5 to 2. Is this okay? Is this समझ में आ रहा? Take down. Go over. Finding range is easy or domain? रेंज इजी है या डोमेन इजी है? दो भी इजी नहीं.
Over. Okay. I'll give you one sum. Will you try? Third problem. Y is equal to 2 divided by 3 minus, से क्या बोलती है? फ्रैक्शनल फंक्शन क्या बोलती है? फ्रैक्शनल. अच्छा, उसकी रेंज मालूम है? जाओ रेंज देखो हमें. नाउ यू ट्राई. आई हैव गिवन यू द रेंज. नाउ फाइंड आउट. सेम मेथड. 6 बजे आ कोई ना जीत मैं. करेक्ट. क्लोज इंटरवल 2/3 comma. No, 2. खाली 2 open bracket. Okay, see here we'll check solution. We know the fractional function range. Okay. Now next multiply 2. If I multiply this will become 0. 2 into less than 2. Correct. Now multiply minus sign. Again if I multiply minus sign, inequality will change. Correct. Now next what to do? Add 3. Minus 2 plus 3 is how much? Is 1. Is this okay? Now what to do? Take reciprocals. If I take reciprocals, inequality will change. Now I want to multiply 2. 2 by 3 less than or equal to 2 divided by 3 minus 2 fractional part less than 2. So what is the range? Range is nothing but 2 by 3 comma 2 close bracket. Now we'll move on to third type. No, second type is over. Now we'll move on to problem third type. Square roots. Done?
Take down next. Type. Find the range y is equal to x square plus 4 if you have square root. Shall we start? Square on both the side. To remove the square root, y square is equal to x square plus 4. Now take x square or shift this to that side. Y square minus 4 is equal to x square. Can I write this function? Any changes? No. Okay. Now see here, I told you what is the range of x square? It is greater than or equal to 0. Correct. So can I write y square minus 4 greater than or equal to 0? Can I write this as y square minus 2 whole square? 2 to the 4. Now this is a square minus b square. So y minus 2, y plus 2 greater than or equal to 0. So can we move on to wavy curve method? देख सकते हैं wavy curve method. Minus infinity to plus infinity, minus 2 to plus 2. So this is plus, minus, plus. So we have greater than or equal to 0. So range is equal to what? So one point you should make a note of this. If you have a square root, so negative part you should remove because उसमें कुछ भी वैल्यू डाला हमें रूट के अंदर माइनस नहीं आता, पॉजिटिव आता. सो ये कब करना? सो जब रूट रहा तो जब रूट रहा क्या करना हमें? नेगेटिव वैल्यूज वी शुड रिमूव, वी शुड टेक ओनली 0 to 2. आर यू गेटिंग? एनी डाउट? 0 to 2. Or sorry, maybe it is 2 to infinity because negative will remove it, it will be 2 to infinity. Correct? Take down. We are going to remove this full no. So only left is this. 2 to infinity. जब भी रूट आता तो तुम्हारा आंसर 0 से आता, या तो 2 से आता, या तो 3 से आता, नेगेटिव पार्ट नहीं आता. डन? So we take one more sum. Over y is equal to root of 4 minus x square. Will you try this? Okay, do it. What the answer? Same answer. No, you won't get same.
answer. If it is wrong also no problem, tell me. Same. See here, y square is equal to 4 minus x square. Correct? So x square is equal to 4 minus y square. So x square we know that it is greater than or equal to 0. So 4 minus square. Now I'll multiply minus sign. Why? Because I want like this. So inequality will change. Nee. So this will become what? Y minus 2, y plus 2 less than or equal to 0. So come back to wavy curve method. Minus 2 plus 2 plus minus plus. Here what sign we have? It is less than or equal to. So which part we should take? This part? No. No. So range is equal to what? Bolo jaldi. Since root is there, so from 0 to 2. From 0 to 2. Because 0 is आता वो इंटरवल में 0 लाई कर रहा हूं. So 0 to 2. Any doubt? समझ में आ रहा? Next sum will you try? Y is equal to root x. Find the range. What is the range of root x? Okay. देख कुछ बोलेगा रूट के पूरे वैल्यू 0 से इंफिनिटी आता सो करेक्ट. If you square on both the side, y square is equal to x. So y square means it is y greater than or equal to 0. That means it is 0 to always range of root x is 0 to infinity. Done? Go over. Okay. So next type. Type fourth, no? Fourth type. Range of quadratic function. Range of quadratic function. Range of quadratic function. What is quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0. 0. Okay. See, if you have a is greater than 0, if a is greater than 0, so we have a formula minus d divided by 4a comma infinity. कब? जब a आपको greater than 0 रहा तो. If a is less than 0, minus infinity comma minus d divided by 4a. Make a note. Make a note of this. Make a note of this. First, we have to check whether a is greater than 0 or less than 0. After that, by using the formula, I can do. What is d here? Discriminant b square minus 4ac. D is nothing but b square minus 4ac.
Over. Okay, take down problem. Y is equal to x square plus x plus 1. Is this a quadratic equation? Yes. So here a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Is a is greater than 0? So what is the formula of range? Minus d by 4a comma infinity. So what is d? B square minus 1 4. Correct? So d is nothing but minus 3. Outside we have one minus sign. No. Minus of minus 3 is nothing but 3. So denominator what we have? 4a. That is 4. So 3 by 4. So range is equal to 3 by 4 comma. Is this okay? Any doubt? Take down. Minus 2x plus 3. Will you find out this? Minus infinity comma 16 डिवाइड बाय 4 ये करें 4 आता ना 4 minus infinity comma 4. What is a? B is minus 2, c is equal to 3. So range is equal to, since a is less than 0, minus infinity comma minus d divided by 4 a. So what is d? B square minus 4ac, that is b is nothing but minus 2 whole square minus 4, a is minus 1, c is 3. Correct? So 4 plus 12, 16. So minus 16. Why minus? Because of this formula. So divided by 4a. 4a is minus 1. So minus 16 by minus 4 is nothing but 4. So range is equal to minus infinity comma 4. Done over? Okay. Now next sum. If quadratic equation y is equal to x square plus 2x plus 4 is given and interval is given x is greater than or equal to 1, domain they have given, if they have given domain, then how to find out?
How to find out? See, if they have given like that, first find out the value of function at 1, minimum value, maximum value. So this will become very easy, no? But condition is you have to check minus b by a whether it is belongs to between these two or not, between 1 to 3, between what is the value of f of 1, value of the function, find out first. 6, no? 6. F of 3, how much? 19. Okay, now check क्या हुआ, 1 plus 2 3 7, this is 3 square plus 2 into 3 plus 4, simplify and tell me. 19, correct? Okay, now check minus b by 2a, it belongs to with the range of 1 comma 3, जो वैल्यू है जो मिलती है हमना माइनस बी बाई टू है वो ये 1 और 3 के बीच में है क्या, चेक करो. हाउ टू चेक? a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 4, minus b by 2 है minus 2 divided by 2 into 1, which is nothing but how much, minus 2 by 2 minus 1. 1 और 3 के बीच में minus 1 आता, does not belongs to, so range you can take, range is equal to 7 to 19, 7 to 19. अगर से उसमें रहा तो क्या करना, वो अब एक दो सम्स के बाद बताता हूं. ओके, रेंज इज 7 to 19. एनी डाउट? फर्स्ट क्या करना, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू फाइंड आउट करना, एफ ऑफ 3 पर वैल्यू फाइंड आउट करना. देन वी हैव टू चेक माइनस बी बाई 2a belongs to the interval 1 to 3. If it is not there, no need to worry, directly you can write. Over? Done? Over, boys. Next sum. Y is equal to x square plus 2x plus 4, x is greater than or equal to minus 3, less than or equal to minus 2. Check. Will you tell me the answer? हाँ करो. Minus 3 and minus 2. First find out f of minus 3, f of minus 2, then check whether it is lying in the interval. Minus b by 2a find out. It is lying in between. It is lying. Check properly, man. क्या वैल्यू आ रही है, माइनस बी बाई 2 है. minus 2. फाइंड आउट माइनस बी बाई 2 है, इतना डिफिकल्ट है. माइनस बी बाई 2 है कितना है, माइनस माइनस 1 उसमें आता है क्या, नंबर लाइन नहीं है, नहीं मालूम होता तुम ना, नंबर लाइन ड्रॉ करना नहीं आता. माइनस 3 इधर आता, माइनस 2 इधर आता, माइनस 1 है कहाँ इसके बीच में आ रहा वो, तो व्हाट इज द आंसर,
f of minus 3 and f of minus 2. That's all, no? क्या? Correct. 7 comma 4. See, f of minus 3. बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं आता फाइंड आउट करना. 9 minus 6 plus 4. 9 minus 2. कितना आया? हाँ? 7. Correct. Again, f of minus 2. 4 minus 4 plus 4. 4 आया. अब वो it is not lying between minus 3 and minus 2. So answer is range is equal to 4,7. जो मिनिमम वैल्यू है वो पहले लिखना, मैक्सिमम वैल्यू है वो बाद में लिखना. इज दिस ओके? Shall I give you one more sum? Take down. Y is equal to 2x square plus x plus 1. X is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1. Try this. Find out f of minus 1, f of 1, then minus b by 2 है. Check whether it is lying in between. Minus b by 2 है क्या आ रहा? Correct. Minus 1 by 4. What is the value of that? कैल्सी है. 1 by 4 की वैल्यू क्या नहीं मालूम? 0 पॉइंट आता नहीं. क्या आ रहा? Minus 0.25. It is lying between minus 1 to 1. Correct. Okay. See here. What is f of minus 1? What is f of 1? 4. Minus b by 2 है, which belongs to the interval minus 1 to 1. इतना सबको समझ में आया? अब करना क्या? Next you should find out f of minus 1 by 4. Should find out. अगर से belongs रहा तो find out करना f of minus 1 by 4. Find and tell me the answer. x की जगह minus 1 by 4 डाल को find out करो. You want me to solve? जहां जहां x है वहां minus 1 by 4 whole square. Minus 1 by 4. Eleven by basic simplification. Basic simplification. 7 by correct answer. 7 by 2 got. जिसे नहीं मिला ना घर को जाको सॉल्व करो. 7 by 8. Now range is equal to which you have equation 1, equation 2, equation 3. Which is minimum value out of 3? छोटी वैल्यू कौन सी? देखे तो मालूम हो रहा. अगर 7 को 8 से डिवाइड करना होगा तो हमें क्या लेना है? 0 लेना. 0.7 by 8. बड़ी minimum and maximum out of 3. Done. Okay. इनको उठाओ भी.
Oh. सर डाउट है एक बार गो थ्रू पूरा प्रॉब्लम टाइप 1 टाइप 2 दिस इज द टाइप 4 go through once okay take down next quadratic upon fifth type fifth method you have any doubt ज़्यादा डाउट है ओके क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अब कैसा हमें फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है गौर से देखो सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई ओपन द ब्रैकेट यहाँ तक किसी तब डाउट है एक्स के टर्म्स को एक साइड ले रखो now take x square common correct take minus x common see here you have minus x and minus x if I take minus x common what you will get y plus y plus 1 correct what is left plus y plus y and minus y left plus y minus 1 what I did here I made quadratic equation in terms of x what I did make quadratic equation in terms of x see x square x c so what is a here what is b what is c till here anybody have doubt now x should be defined x should be defined कब डिफाइंड होता है when x is real number तो उसके वास्ते कंडीशन क्या d is greater than or equal to 0 always quadratic upon quadratic sum देखो रहे तो first what you have to do y is equal to you have to take x square by quadratic upon quadratic cross multiply and make quadratic equation in terms of x till here anybody have doubt complete this till here उसके बाद क्या करा तुम यहाँ तक हर एक बार सेम करना
over. Done. Okay. Now x will be defined if d is greater than or equal to 0. What is d? D is what? B square minus 4ac. So what is b here? What we'll do, we'll take here as plus. So this will become minus and minus because ax square plus bx plus c के फॉर्म में रहता है नहीं. So b is what? Minus y minus 1 whole square minus 4. What is a? Y minus 1. What is b? Is this okay? B square minus 4ac. Sorry, c is wrong. C is, sorry ma, can you change the color? क्या माँ कलर पसंद नहीं आया? दिख रहा नहीं क्या? Take this. White is okay. So D is greater than or equal to, this is okay. Okay. So what is A here? लिख लेंगे separate. B क्या? C is what? ABC. So B square minus 4AC. So B is minus Y minus 1 whole square minus 4A C greater than or equal to 0. Any doubt? ये स्टेप समझ में आया सबको भी? B square minus 4AC. Now next, this is A minus B whole square. So A square plus B square minus 4AC minus 4AC. क्या होता है ये? Minus minus plus into minus minus 4y. Correct? So minus, open the bracket. So y square minus y again minus y plus 1. Correct? Y square minus y. So minus 2y होता नहीं. Y square plus 1 minus 4y minus 4 y square minus 2y plus 1. So हाँ क्या हुआ? Any mistake? क्या माँ? समझ में नहीं आया? Simplification, basic simplification. Okay. Expand this. Minus y minus 1 whole square. What is a minus b whole square formula? Minus 2ab. Correct? Now expand that. A square plus b square minus 2a and b. Correct? A square plus b square minus 2ab. Is this okay? A is minus y there. Be careful. Minus 4. Y minus 1 into y minus 1. Y minus 1 whole square. Correct? Easy way में जाएंगे. Y minus 1 whole square. यहाँ तक क्या था? डाउट है? ये स्टेप में डाउट है क्या? बोलो. Anybody have doubt? Okay. इनको क्या डाउट दिख रहा? क्या में डाउट है सुनना? डाउट है? Okay. Now minus y whole square is what? Y square plus 1 minus into minus plus 2y. Is this okay? Now here minus a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Is this okay? I am going step by step. Minus 4 outside. Okay. यहाँ तक setup doubt है? We'll go step by step. No. Y square plus 1 plus 2y. Open with minus 4. Minus 4y square minus 4 plus 8y. Till here anybody have doubt? लिखो ना को टाइम दे तो लिखने में.
सो वाई स्क्वायर माइनस 4y² क्या होता? -3y²। कैंसल। अब तो कलर पेन यूज करना पड़ता। +2y +8y 10y कैंसल। +1 -4 -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये दिख रहा कलर तुमना लास्ट बेंच? Okay. Now what I will do, I will multiply minus sign. So this will become 3y² minus 10y plus 3 less than or equal to 0. क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया नहीं? अब हम ना मालूम इसका डोमेन कैसा फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट डोमेन कैसा? फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। नो टिल हियर एनीबॉडी हैव डाउट? कंप्लीट टिल हियर, यहां तक कंप्लीट करो। इसके बाद कैसा वेवी कर्व मेथड फाइंड आउट करते हैं मैं करता हूं बोर्ड को। ये तुमने बड़ा के जिक्र करके बोला तो तुमने सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा उसके वास्ते। ओवर। Over. Boys done. Okay. See here. Now next step. See here. 3 3s are 9. 9 1s are factors minus minus. Correct? No? No. 3y² minus 9y minus y plus 3 less than or equal to 0. So take 3y common, y minus 3, take minus 1 common, y minus 3. ये आता नहीं 10th स्टैंडर्ड का? आता नहीं आता? इट इज लेस देन, नो लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टर्स में जब भी आता तब हमें क्या यूज करना? कौन सा मेथड? वेवी कर्व मेथड लिख लो, वेवी कर्व मेथड। सो इट इज वेरी सिंपल, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, y minus 3y minus 1 equal to 0. What is the value of y? 1/3 and 3. So 1/3 is here,
3 is here, plus minus plus, ये रैंडमली नहीं डालना, एक बार चेक करना हमें वैल्यूज डाल को। 4 डाले तो क्या होता, 4 4 प्लस में आता नहीं, सो प्लस माइनस प्लस, डन, ओके। नाउ इज लेस देन विच, पॉजिटिव शुड आई टेक और नेगेटिव, क्या पॉजिटिव वैल्यू लेना या नेगेटिव लेना है, वाई, बिकॉज of this it is less than or equal to, so we'll take negative value, inequality है close, so what is the range, 1/3 to 3, that means domain के जो problems करे हमें वो है काम आ रही हमला नहीं, useful है, how to find out the wavy curve method, so answer is 1/3 to 3, and one more thing, okay, leave, done, nothing, any doubt, anybody have doubt, take down, easy से समझ में आया, एक दो बार प्रैक्टिस करे तो और अच्छा आता। We'll take one more. Will you try? Done, boys. Over. Okay. Next quadratic upon quadratic. One more sum. Y is equal to x square plus x plus 2 divided by x square plus x plus 1. Will you try this? Okay, try. What to do? Take y is equal to x square plus x plus 2 divided by x square plus x plus 1. Cross multiply directly, yx square plus yx plus y is equal to x square plus x plus 2. अब स्टेप्स को कट करना तुम्हें, जैसे ही तुम ना मालूम होगा नहीं स्किप कर ले जाना। अब इसलिए तो x स्क्वायर कॉमन ले तो y माइनस 1, करेक्ट। नाउ इफ आई टेक x कॉमन, y माइनस 1, करेक्ट, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? दो स्टेप उड़ा ले हमें, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अरेंज करा, कॉमन लिया। इज दिस ओके? ओके, नाउ x इज इन क्वाड्रेटिक, करेक्ट। अब है एक चीज तुम्हें नोट करना, कौन सा कलर तुम्हारा अंख्या, हाँ, डार्क ब्लू, ओके।
दिख रहा है? कौन बोले इसमें डार्क ब्लू दिख रहा है? येलो। ओके देखो, मेक ए नोट हियर। प्रीवियस समय भी देखो, जब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आता, y माइनस वन वाई माइनस वन, वेन यू पुट x एज y, दो साइड भी क्या हो रहा, सेम वैल्यू आ रहा, 0 0 हो रही है वैल्यू। इफ आई टेक y एज 1, क्या होता, 0, है भी 1 ले तो ऐसा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम वैल्यू पर 0 हुए तो, आई रिपीट वंस अगेन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम वैल्यू पर 0 हो रही तो इसके आंसर में से 1 को निकालना हमें। और 1 1 को ये क्या हो रहा, दो भी 0 नहीं, तो जब हमें आंसर मिलता है उसमें से हमें 1 को निकालना। समझ में आ रहा? उसमें आपको मैं एक बोला था, उसमें हमने नहीं मिल रहा वैसा, चेक करो होना तुम्हें नहीं। सी, इफ आई पुट हियर 0 you will get -1, if I put 0 -1, so I should remove 1 there। एक नोट पॉइंट वो। आफ्टर दैट नाउ व्हाट टू डू, b square minus d is greater than or equal to 0, x is defined, x will be defined if d is greater than or equal to 0। so what is d, b square minus 4ac। so what is b here, what is a, यहां तक समझ में आया, मालूम हुआ? ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट वो भी करे तो सेम मिलता। कैन आई टेक y माइनस वन कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड? अब तुमने नहीं समझ में आ रहा तो एक्सपेंड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर करो, फिर इसे एक्सपेंड करो, यू विल गेट द सेम। शॉर्टकट मेथड क्या था, टेक y माइनस वन कॉमन। इफ आई टेक y माइनस वन कॉमन, सो y माइनस वन इधर रहता, -4 ऑफ y प्लस y माइनस टू। करेक्ट? समझ में आया? इधर से y माइनस वन कॉमन ले इधर, और इधर एक चलेगा तो 4y माइनस टू। इज दिस ओके? सबको समझ में आया? ओके, नाउ y माइनस वन कीप एज इट इज। इसे y माइनस वन ओपन करो, -4y प्लस 8, y माइनस वन एज इट इज, -3y प्लस 7। इज दिस ओके? नाउ कैन वी यूज वेवी कर्व मेथड? 1 and 7/3, 7/3 बड़ा या 1 बड़ा? माइनस नहीं आता, तो 7/3 इज बिगर नंबर 1 से। इज दिस ओके? प्लस माइनस प्लस, विच वैल्यू? सो रेंज इज व्हाट, बोलो? 1,7/3 बोथ साइड क्लोज ब्रैकेट, करेक्ट? बट मैं ये भूल गया, 1 को निकालना बोला था मैं से नहीं। सो ओपन ब्रैकेट, वी कांट टेक 1, अगर से 1 ले क्या हुआ था, 0 0 हुआ था, है क्या बसता, y माइनस टू इक्वल टू 0। ये भी 1 ले तो y माइनस वन 0, ये वैलिड है क्या? -1 इज इक्वल टू 0 हो सकता? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स को देखना, अगर से दो में भी सेम वैल्यू पर 0 हो रहा, दैट मीन्स यू शुड रिमूव दैट वैल्यू, दैट पॉइंट। कांता भी लिख लिया वो। सो रेंज इज 1,7/3। सो आई विल स्टॉप द क्लास। नमाज को जाकर तक तुम होना प्रैक्टिस करो। मैं आपको पूछता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके? क्या हुआ, डाउट है वो बच्चा को? हाँ, तुम्हें यस डाउट है। आज की क्लास में ज्यादा डाउट है किससे तभी? एनीबॉडी हैव डाउट इन टुडेज क्लास? ओके।